Okay students, so minus 3 upon 4, 5 upon minus 12, minus 7 upon 16 and 9 upon minus 24. My very first step will be, you will see whether जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए. सो आई विल शिफ्ट इट टू द न्यूमरेटर. सो इट विल बिकम माइनस 3 अपॉन 4, कॉमा माइनस 5 अपॉन 12, comma minus 7 upon 16, and in the last minus 9 upon 24. Now students, the denominators are not same, so you will make it same. So I will take out the LCM of 4, 12, 16, 24. Okay. So LCM of 4, 12, 16, 24 will be, first of all you will write take 2. So 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, and 2 8 ja 16, 2 12 ja 24, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 6 ja 12, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, again 2, and then in the last 3. Now when you will multiply this, your answer will be 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 2 ja 16, 16 3 ja will be 48. So my LCM will be 48. That means I have to make 48 in the denominator. So I will write the question for that is minus 3 upon 4, minus 5 upon 12, minus 7 upon 16, and minus 9 upon 24. Now in fourth table 48 will go how many times? 12 times. So I will multiply here by 12. In 12th table it will go 4 times. Okay, in 16th table it will go 3 times. Yes or no? And in 24th table it will go 2 times. Now 12 3 ja will be 36. So minus 36 upon 48, minus 20 upon 48, minus 21 upon 48, and minus 18 upon 48. Now all these are what? All these are negative numbers, and we know that the bigger negative number will be the smallest one. Yes or no? So इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 36. So minus 36 will be the smallest one. Okay, so I will write minus 36 upon 48 first. After that minus 21. So minus 21 upon 48. दिस इज़ असेंडिंग ऑर्डर ओनली. हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में ही मैं कर रही हूँ, बट नेगेटिव नंबर्स हैं इसीलिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा माना जाएगा. सो माइनस 36 अपॉन 48, देन माइनस 21 अपॉन 48, देन minus 20 upon 48, and then in the last minus 18 upon 48. Now I will write the original rational number. So minus 36 upon 48 is minus 3 upon 4. Minus 21 upon 48 is minus 7 upon 16. Then minus 20 upon 48 is minus 5 upon 12. And 18 upon 48 is minus 9 upon 24. Okay. Now, third and fourth I am giving you as homework. I am doing question number 6 now. That is, arrange the following rational number in descending order. That is same as question number 5. Okay, so let's start doing. Question number 6. Arrange in descending order.
So my first question is minus 2 upon 5, comma 7 upon minus 10, then minus 11 upon 15, and then in the last 19 upon minus 30. My very first step will be to make all the denominators positive. So I will shift these sign to the numerator. So now my my new rational numbers will be minus 2 upon 5, then minus 7 upon 10, then minus 11 upon 15, and then in the last minus 19 upon 30. Now you have already done this LCM 5, 10, 15 or 30 in question number 5th, first one. Yes or no? The LCM was 30. So I will directly write down the LCM. LCM of 5, 10, 15 and 30 will be 30. So minus 2 upon 5, minus 7 upon 10, minus 11 upon 15 and minus 19 upon 30. Here I will multiply by 6. Here I will multiply the 10 by 3 for getting 30. Then 2 and in the last 1. So my answer will be minus 12 upon 30, minus 21 upon 30, minus 22 upon 30 and minus 19 upon 30. Now students, what we are doing? We are arranging the numbers into descending order. Descending order means bade se chota, bigger to smaller. Now we all know that in case of negative numbers, the smallest number will be the bigger. Yes or no? जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा. तो इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -12. सो आई विल राइट -12 upon 30. अब जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी. ठीक है, -12 upon 30 जो है वो किससे बड़ा है? -19 upon 30. Yes or no? After that, -21 upon 30 and in the last -22 upon 30. Okay, I am writing here only. जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो भी यहीं पर लिख रही हूँ. -12 upon 30 मतलब कौन सा आएगा? -2 upon 5 is the biggest. After that -19 upon 30. तो -19 upon 30 आ जाएगा. After that -21 upon 30 that is -7 upon 10 आ जाएगा. And in the last -11 upon 50. Okay. Now the next question, that is second one. Second one is -2, -13 upon 6, 8 upon -3, 1 upon 3. Now my very first step will be to make the denominator positive. So I will write -2, -13 upon 6, -8 upon 3, 1 upon 3. Now my next step will be to find out the LCM. Why? To make the denominator same. जब आप LCM निकालोगे तो LCM आपका होगा 6. ठीक है, तो if you want to find out the LCM you can find out. I am doing directly. LCM of, here nothing was given in the denominator, so I will write 1.
LCM of 1, 6, 3 and 3 will be 6. Minus 2 upon 1, minus 13 upon 6, minus 8 upon 3 and 1 upon 3. So here I will multiply by 6. Here I will multiply by 1. Here I will multiply by 2. And here also I will multiply by 2. So my answer will be minus 12 upon 6, then minus 13 upon 6, then minus 16 upon 6, and then in the last 2 upon 6. Now students, when you see this question, one number is positive and the rest of the number is negative. Now you all know that every positive rational number is greater than every negative numbers. Yes or no? So can I say that 2 upon 6 is the bigger one? Descending order कर रहे हैं हम, तो 2 upon 6 सबसे greater हो जाएगा. So I will write 2 upon 6 first. Why? Because this is positive and positive rational number is always greater than negative rational number. So I will write 2 upon 6 first. After that जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा. So minus 12 upon 6 will come. After that minus 13 upon 6 will come. And in the last minus 16 upon 6 will come. Okay. So my original fraction will be 1 upon 3, 2 upon 6 के लिए. Yes or no? 2 upon 6, that is 1 upon 3. After that minus 12 upon 6, that is minus 2. After that minus 13 upon 6. Minus 13 upon 6 is minus 13 upon 6. And in the last minus 16 upon 6, that is 8 upon minus 3. Okay, in this manner you are going to do. Now third and fourth will be your homework. You can do on your own. Yes or no? I am doing question number 7 now. Now student, question number 7 is, which of the following statements are true? Minus 3 upon 5 lies to the left of 0 on the number line. Is it true? क्या माइनस 3 अपॉन 5 जो है वो 0 के लेफ्ट साइड में होता है? तो आपका आंसर आएगा ट्रू. वाई ट्रू? द रीज़न इज दैट all the negative numbers come to the left side of the 0. That is why this statement is true. Minus 12 upon 7 lies to the right of 0. Right मतलब 0 के इस साइड में. See, I am drawing the number line. यहाँ पर 0 है, यहाँ नेगेटिव नंबर्स आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है. ओके, 0 पॉजिटिव नेगेटिव राइट साइड लेफ्ट साइड. नाउ दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका दैट विल बी फॉल्स because here the negative number is given and right is given. तो राइट साइड में नहीं होता है नेगेटिव नंबर्स, कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में. ओके, नाउ 1 upon 3 and minus 5 upon 2 lie on opposite sides of 0 on the number line. Yes, this statement is true. Why? Because 1 upon 3 is positive, so it will lie to the right side of the 0. And minus 5 upon 2 is negative, so it will to the left side of the 0. That means opposite side में आ रहा है. That means this statement is correct. Okay. Now minus 18 upon minus 13 lies to the left of 0 on the number line. Now this statement is false, student. Why? Because minus 18 upon minus 13 means I will cancel this minus, so it will become 18 upon 13, and 18 upon 13 is positive
and every positive numbers come to the right side of the 0. Yes or no? So this statement is false. Minus 5 upon minus 8 lies on the right of minus 5 upon 7 on the number line. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको किस तरीके से. तो आपको इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है. रीज़न का मैं आप लोगों को देखती हूँ, एक बार मैं खुद ही बता दूँगी. क्वेश्चन नंबर 7 यू विल डू ऑन योर ओन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इन क्लास वर्क कॉपी ओनली. All these questions you have to do in your classwork copy. Okay. So in case of I am explaining you question number 5th. 5th में क्या दिया हुआ है? minus 5 upon minus 8 lies on the right of minus 5 upon 7. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी तो माइनस 5 अपॉन 7 जो है मैं यहाँ लिखूँगी या यहाँ लिखूँगी. सपोज़ ये 0 है तो माइनस 5 अपॉन 7 कहाँ लिखूँगी मैं? यहाँ पर. वाई? बिकॉज ऑल द नेगेटिव नंबर्स कम हियर. ठीक है. अब माइनस 5 अपॉन 7 है और ये माइनस 5 अपॉन माइनस 8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 8. दैट मीन्स ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? 0 के राइट साइड में आएगा. यस और नो? अब अगर 0 का राइट साइड में 5 अपॉन 8 है तो ऑब्वियसली माइनस 5 अपॉन 7 नेगेटिव नंबर है, तो इसके राइट साइड में भी 5 अपॉन 8 राइट साइड में ही आएगा. यस और नो? और यही आपको स्टेटमेंट दिया था कि माइनस 5 अपॉन माइनस 8 lies on the right of minus 5 upon 7. So this statement will be true. Is it clear? So you will do all these questions in your classwork copy. Okay? Now this much is for today. The rest question we will do tomorrow. Thank you.